Hello and welcome to my today's video. So last week was okay. Later end of the week में थोड़ा सा recovery show हुआ था, and this time metal stocks have started to show up in the strategy. So top 15 का कुछ metal stock part बन गए, and I'm expecting metal stocks to perform well in next 3 months. So slowly and gradually वो I think top 15 में आ जाएंगे. But that's apart from the strategy, because strategy में जो top 15 होंगे हम लोग अभी वही check करेंगे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ लास्ट वीक. इनिशियल डेज ऑफ द वीक में ही हो गया था, मंडे और ट्यूसडे, एंड आई लेट यू नो द नेम. एंड देर इज अ स्लाइट चेंज इन द स्टॉप लॉस परसेंटेज. That also I'll take you through. So I'll quickly present the screen to let you know the additions, the dropouts, the top 15 stocks for the next week, and of course the portfolio performance. So I'll just share the screen. First of all, the name of the stocks and the presentation are strictly for educational purposes. Request you to kindly do your proper due diligence before making any investment. However, there is a change in the stop loss rule. From 10%, I have reduced it to 5%, which will be applied to every stock. So moving on to the next page, this is the portfolio for the next week, starting tomorrow. So first one is Bajaj Auto, second is Trent, then we have Vedanta, Metal and Mining, then Kolpal, then we have TVS Motors, Motherson Sumi, M&M, MCX, Dixon, Naukri, Sun Pharma, Tond Farm, Bosch Limited, Bharti Airtel, and Shriram Finance. So the ones highlighted in blue are the new additions. One is Vedanta, Sun Pharma, Bosch Limited, and Shriram Finance. Pharma is back in the strategy because last के 1-2 दिन में Pharma ने अच्छा perform किया था. And जो dropouts हुए हैं वो है Voltas, Hero MotoCorp, Indigo, and OFSS. In the brackets I have written its current rating. So Voltas आज की डेट में 22 पे है, Hero MotoCorp is at 32, Indigo is at 16, and OFSS is at 39. Okay, so moving on to the next sheet. This shows the portfolio performance as on 27th September 24, which was Friday. So MCX has so far given us a return of 32.8%, then Bajaj Auto ने 21%, Trent 18.1%, Voltas 15.4%, Dixon 11.7%, TVS Motor 9.9%, M&M 6.4%, Bharti Airtel 4.6%, Motherson Sumi 3%, then Kolpal 2.7%, Indigo 0.3%. इसके बाद नौकरी, टॉन्ड फार्म, हीरो मोटोकॉर्प ने नेगेटिव दिया है माइनर, एंड IEX इज ऑलरेडी आउट ऑफ अ पोर्टफोलियो. स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, एक ही दिन में 10% क्रॉस कर गया था. सो दिस गॉट आउट ऑफ अ पोर्टफोलियो. नाउ इफ वी टॉक अबाउट वोल्टास ने टोटल 15.4% का रिटर्न दिया है. नाउ इट्स आउट ऑफ आर पोर्टफोलियो. तो अगर हम कल एग्जिट करते हैं तो विच मीन्स वी आर बुकिंग प्रॉफिट इन दिस स्टॉक एज वेल. तो ये स्टॉक्स में हमने प्रॉफिट बुक किया है इन पास्ट. इन स्टॉक्स में हमने लॉस बुक किया है, या तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है या आउट ऑफ द स्ट्रैटेजी हुए जिसकी वजह से हमने लॉस बुक किया है. नाउ हाउ डू आई कैलकुलेट इसका एवरेज प्लस इसका एवरेज प्लस इसका एवरेज. तो जो भी एवरेज आता है दैट्स बिकम्स द ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न, विच इज करेंटली एट 8.90%, विच वॉज 8.50% लास्ट वीक. सो आज आई थिंक 7th वीक हम लोग का हो गया है सिंस वी स्टार्टेड दिस, एंड आर पोर्टफोलियो इज गिविंग अ decent return, which is 8.90%. And one thing I would like to tell you that Nifty Midcap 100 index has given less than 1% return in last 7 weeks, whereas our portfolio has given 8.90%. So approximately we have beaten the index by 8%. So that is it for now. And thank you so much for watching this video. If you haven't subscribed the channel yet, request you to kindly do so. And if in case you have really liked the video, please press on the like button. Thank you so much for your time and take very good care of yourself. Thank you.